हेलो स्टूडेंट्स गुड इवनिंग टू ऑल पिला माने मु सुरमांशु आपण मानक स्वागत करिछि हम ओडिसा रो नंबर 1 स्टडी चैनल साइज स्टडी क्लासेस। तो पिला माने तमरो बीएड एंट्रेंस 2024 पाई जो टीचिंग एप्टीट्यूड रो पिला माने प्रैक्टिस सेटा में कवर करूथले। तो सेटा रे पिला माने सातटा प्रैक्टिस सेटा में कवर करिसंती। आज हमर पिला माने अछि प्रैक्टिस सेट नंबर 8। आज पिला माने प्रैक्टिस सेट रे पूरा नुवा प्रकार रो पिला माने क्वेश्चन अछि और 48 टा क्वेश्चन आज अछि। आज पिला माने टोटल हमें 48 टा क्वेश्चन आज क्लास रे कवर करबा और सबुडा नुवा टाइप रो पिला माने क्वेश्चन। तो समस्त पिला ने बुझी के आंसर दबा को ट्राई करबो कारण हबुडा को अंडरस्टैंडिंग बेस्ड अछि माने नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम अछि घोषापाटा बहुत कम अछि बेसी पिला ने बुझीबा पर एटिका फोकस दबा पड़िबो। और लेट न करी पिला ने क्लास को जिबा पूर्व जदि चैनल प्रति नुवा छ चैनल को लाइक करो सब्सक्राइब करो पिला माने एटार स्कैन करो स्कैन करी तमे टेलीग्राम रे डिस्कशन ग्रुप रे जॉइन हो जाओ जोटार कि तमरो कोन ए सब क्लास गुडा कर पिला ने फास्ट अपडेट सेटा तमु मिलि जिवो आ तमे माने डिस्कशन रे करि परिबो तमरो पाठ रिगार्डिंग आ पिला माने एटा को स्कैन करले तुम ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करि परिबो आ बेसी किछि कहिबार नै पिला माने जेबे जिबा डायरेक्ट क्लास ऊपर को देखिबा जे प्रथम क्वेश्चन कोन अछि। तो फर्स्ट क्वेश्चन पिला देला रे ड्यूरिंग ए क्लासरूम डिस्कशन ए टीचर ऑफन pays more attention to voice than words. This is an example of this. अपेक्षा बेसी अटेंशन दोछन हला गोटे क्लासरूम डिस्कशन ले टीचर कोन करूछंती पुओ मानन को जियो मानन को अपेक्षा बेसी अटेंशन दोछन ताले एटा गोटे कहार एग्जांपल हला जेंडर बायस एग्जांपल द जेंडर आइडेंटिटी एग्जांपल द जेंडर रिलेवेंस ना जेंडर कॉन्स्टेंस। तो पिला माने कोन रे तले कि क्लासरूम टीचिंग बेले बा क्लासरूम डिस्कशन बेले टीचर कोन करूछंती रे जे पुओ मानन को बेसी गुरुत्व दोछन जियो मानन को अपेक्षा ताइ से कोन करूछन जेंडर बायस पिला ने करूछंती रे टीचर एठी जेंडर बायस करूछंती तो पुओ जियो भीतर से भेद आंसर टीचर ऑप्शन नंबर ए जेंडर बायस टीचर कोन करूछंती रे टीचर जेंडर बायस करूछन। प्रथम क्वेश्चन आंसर हला टीचर कोन करूछंती जेंडर बायस पिला ने करूछंती हला सरीला पिला ने प्रथम क्वेश्चन बुझी पालो समस्त ताबर जे क्वेश्चन नंबर 2 को क्वेश्चन नंबर 2 देला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग theories while viewing children as the active seeker of knowledge emphasize the influence of social and cultural content on their thinking। पिला ने बढ़िया क्वेश्चन दे छै आउ थरे पढिबा कहला एमानन को भितरु किए पिला माने कोन करिथिले रे पिला मानन को एक्टिव सीकर ऑफ नॉलेज विषय भाबुथिले आउ से कोन करूथिले रे पिला मानन को जो नॉलेज कंस्ट्रक्शन ले से सोसाइटी हमर कल्चरल कंटेंट रो पिला माने प्रभाव अछि बोले कहउथिले हला एई जे चार जण हमर थियोरिस्ट को नाम ना दिया जाई छी ताइ भितर किए कोन करूथिले रे से भाबुथिले कि चिल्ड्रन माने एक्टिव सीकर ऑफ नॉलेज चिल्ड्रन माने निजे पिला ने नॉलेज कंस्ट्रक्शन करिवे एंड निजे माने नॉलेज कंस्ट्रक्शन करछले दे आर एक्टिवली इन्वॉल्वड इन द स्टडी आ कोन कहिला ता से आ कहउथिले कि हमर सोसाइटी ऑफ जो कल्चर रहला ताहार भी पिला माने कोन रे प्रभाव हमर नॉलेज कंस्ट्रक्शन ऊपर अछि बा छुआ मानकर थिंकिंग दा ता द्वारा प्रभावित हुए। तो एटा किए कहिथिले जेबी वाटसन ना जॉन जीन पियाजे ना लेव हाइगोट्स्की ना लॉरेंस पर कोलबर्ग छाड़ दे जे लॉरेंस कोलबर्ग। तो पिला माने कोन हमरे देखो पिला माने एंक भीतर जीन पियाजे भी कोन कहिथिले रे से पिला माने चिल्ड्रन को कहथिले दे आर द एक्टिव सीकर ऑफ नॉलेज दे आर द मिनी साइंटिस्ट लेव हाइगोट्स्की भी सेम कांसेप्ट कहथिले आ लॉरेंस कोलबर्ग तो पिला से मोरल डेवलपमेंट कथा कहिथिले सी हबनी आ हमर जेबी वाटसन से कोले बिहेवियरिस्ट थिले तो बिहेवियरिस्ट माने से कोन कहथिले चिल्ड्रन आर ब्लैंक स्लेट से छुआ माने को ब्लैंक स्लेट बोली कहथिले तो पिला ने ऑप्शन नंबर बी और सी भीतर कोन आंसर अछि ताले जदी दी जण सेम कथा कहउचंदी दी जण के भीतर जॉन्टी कोन गोटे डिफरेंस थिला कोन पिला माने हमर जो भाइगोट्स के थिले से सोसाइटी और कल्चर रो इन्फ्लुएंस हमर कोन ले पिला माने छुआरा नॉलेज ऊपर पढुची बोली से कहिथिले हला छुआर जो डेवलपमेंट होउची तार हे जो डेवलपमेंट रे तार थिंकिंग रे तार कल्चर और सोसाइटी रो पिला ने प्रभाव अछि के कहिथिले भाइगोट्स की हमको पिला ने से सोशल और कल्चरल कंटेंट दे दरा ताले कोन हो आंसर ऑप्शन नंबर सी लेव हाइगोट्स के पिला माने एटा कहिथिले बुझला लेव हाइगोट्स की कहिथिले तबर आंसर शीट रे कि तो कोन थिला यार पिला ने बी थिला जोटा भूल लेव हाइगोट्स की पिला माने कहिथिले हला क्वेश्चन नंबर 3 बुझिबा तो गिविंग क्यूज to the children and offering support as when they are needed is an example of this। तो कोन पिला माने छुआ मानन को आंसर कला बळे किछ हम क्यू प्रदान करिबा हला किछ तांको माने कोन माने हेल्प करिबा हला बा जतो जगर सपोर्ट दरकार होची से मानन को सपोर्ट प्रदान करिबा एटा कहार एग्जांपल बढ़िया क्वेश्चन टे पूरा कांसेप्ट बेस्ड आउ थरे पढे पिला माने छुआ मानन को हमें कोन करिबा रे किछ हेल्प करिबा तबा टेम्परेरी सपोर्ट दबा जतो तांको दरकार पडुची नीड दरकार पडुची तांको सपोर्ट दबाटा कहार एग्जांपल रेनफोर्समेंट ना कंडीशनिंग ना मॉडलिंग ना स्कैफोल्डिंग। तो पिला ने कोन हबरे
कौन कह जाए स्कैफोल्डिंग कह जाए तो जो टेम्परेरी सपोर्ट रहला छुआ मान जेतेबेला दरकार होचे ताको सपोर्ट दोछंती सेटा तुम कोन कहंतरे हमें सेटा कहंते पिलाने स्कैफोल्डिंग ऑप्शन नंबर डी हेगला करेक्ट आंसर तम मन में क्वेश्चन स्कैफोल्डिंग वर्ड टा के देथिले द वर्ड स्कैफोल्डिंग वाज गिवन बाय whom पिलाने जो स्कैफोल्डिंग वर्ड टा के देथिले हला तो स्कैफोल्डिंग कांसेप्ट विषय पचारुनी ए वर्ड टा पिलाने के देथिले भाइगोट्स्की को थ्योरी में स्कैफोल्डिंग यूज करंदी किंतु वर्ड टा पिला माने भाइगोट्स्की देइ नथिले हला आउ जने साइकोलॉजिस्ट देथिले कोन ताको ना तमे माने मते कमेंट सेक्शन में बताइयो बुझियला तो एठी आंसर करला ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 4 को जिबा 4 कोन देइसे करे मतलब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर कैरेक्टराइज द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज प्रपोज्ड बाय जीन पियाजे पहला पिला माने ए चारिटा ऑप्शन देइछि ए चारिटा भितरु गोटे छुआ जत कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज रे थाए ये ता भितरु को बिहेवियर टा देखाई हमहु पचारिछि हला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर कैरेक्टराइज द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज as proposed by जीन पियाजे the hypothetic deductive reasoning of propositional thought conservation and class inclusion deferred imitation and object permanence the make believe in play and irreversibility of thought तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज रे एमत्र कोटा पिला ने देखा जाए सेटा हमर क्वेश्चन अछि रे कोन आंसर तमे माने पूरा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज रे एमत्र कोटा देखा जाए को आराम से तो पिला माने हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग केतबे देखा जाए फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रे देखा जाए एटा तो हबनी कंजर्वेशन एंड क्लास इंक्लूजन यस कंजर्वेशन पिला माने कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज रे कंजर्वेशन आसी जाय त ऑप्शन नंबर बी हला करेक्ट आंसर इमिटेशन ऑब्जेक्ट परमानेंस कार पिला माने सेंसरी मोटर कैरेक्टरिस्टिक्स रे आ मेक बिलीव इन प्ले एंड इरिवर्सिबिलिटी कार पिला माने प्री ऑपरेशनल स्टेज रे हला हमर इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट एटा कार पिला माने प्री ऑपरेशनल स्टेज रे कैरेक्टरिस्टिक्स गोटे हला प्लेज हम प्री ऑपरेशनल स्टेज को प्लेज कोन जोटा मेक बिलीव इन पे आ जो डिफर्ड इमिटेशन रहिला ऑब्जेक्ट परमानेंस रहिला एटा माने सेंसरी मोटर हम पचार जी कोन कोटा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज रे कैरेक्टरिस्टिक्स कोड ऑप्शन नंबर बी हला चलो क्वेश्चन 5 को जीवा क्वेश्चन 5 दला like we always think of multiple solution of a problem many of which are original solutions Ruhi is displaying the characteristics of this bhai जबरदस्त क्वेश्चन मुंडो खरा क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन देखा जाऊ पिलानी के करि परिबो हला कोन करि छि रे उही पिला माने कोन करू छि सब बारे गोटे प्रॉब्लम रे से मल्टीपल सॉल्यूशन पिला माने से भाबु छि हला आ जो सॉल्यूशन गुडा को भाबु छि ता भीतर कोन पिला माने बहुत प्रकार ओरिजिनल सॉल्यूशन रहउ छि रे हला जोडा के तार सॉल्यूशन बे होउ छि ताले रुही रो पिला ने को कैरेक्टरिस्टिक्स से देखा जाउ छि हला रुही कोन करू छि रे गोटे प्रॉब्लम रे से बहुत सारा सॉल्यूशन कहि परउ छि आ सब सॉल्यूशन गुडा ठीक होउ छि ताले कोन कैरेक्टरिस्टिक्स से देखउ छि ताके गोटे क्रिएटिव थिंकर तासे गोटे कन्वर्जेंट थिंकर ना से रिजिड थिंकर ना दे इगोसेंट्रिक थिंकर तो पिला माने मल्टीपल सॉल्यूशन से भाबी परु छि ता माने कोन रे क्रिएटिविटी अछि एंड क्रिएटिविटी इज रिलेटेड विथ क्रिएटिव थिंकर देन ऑप्शन नंबर ए पिला माने हेगला क्रिएटिव थिंकर कन्वर्जेंट थिंकर माने कोन रे पिला माने से गोटी एस्पेक्ट्स हला गोटे कन्वर्जेंट थिंकिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग कन्वर्जेंट थिंकिंग माने गोटे डायरेक्शन को से चिंता करबा डाइवर्ट माने मेनी डायरेक्शन को चिंता करबो तो कन्वर्जेंट थिंकिंग न नाही रिजिड थिंकर तो जमान होय रिजिड गोटे खराब पड़ आसी गला इगोसेंट्रिक भी खराब पड़ आसी गला एटा नहे तो पिला ने कोन हो आंसर ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 6 देखिबा क्वेश्चन 6 कोन दला रे the in a situation of less participation of student belonging to a deprived group in teaching learning process a teacher should dash कोन कहला पिला माने कोन कहला रे in a situation of less participation of student belonging to a deprived group in a teaching learning process a teacher should dash टीचर गोटे पिला माने क्लास रे पढौचंती आ जोठी कोन रे जो डिफरेंट श्रेणी रो पिला मानकर जे कि कोन पार्टिसिपेशन कम अछि बा से माने क्लासरूम डिस्कशन ले बा पाठ पढा रे से माने बेसी पार्टिसिपेट करू नाहंती एमिति सिचुएशन ले टीचर कोन करिवो हला जदि पिला माने कोन के पछुआ श्रेणी रो लोक माने अछंती बा छुआ माने अछंती जो माने कोन क्लासरूम डिस्कशन रे भाग न नाहंती से माने सेफ फील करू नाहंती जे को नाहंती चुपचाप हे बसुचंती पार्टिसिपेट करू नाहंती ले ई बडा सिचुएशन ले टीचर रे कोन करिवो आस्क द चिल्ड्रन टू विथड्रॉ फ्रॉम स्कूल छुआ माने कहे स्कूल तो पळै जाओ accept the situation as it is जेमिति अछि सेमिति आके छाडी दबो ता लोअर और एक्सपेक्टेशन ऑफ सम स्टूडेंट से स्टूडेंट मान पर से किछि एक्सपेक्टेशन रखिबोनी ना रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन टीचिंग एंड फाइंड्स द वे टू इंप्रूव द स्टूडेंट्स इन्वायरमेंट तो पिला ने एटा तुम ऑप्शन काटि के भी करि परिबो रे हला ऑप्शन एलिमिनेशन ले आस्क द चिल्ड्रन टू विथड्रॉ फ्रॉम स्कूल छुआ को स्कूल बाहर करबा जमा नुहे इंक्लूसिव एजुकेशन या विरोध करूछि accept the situation as it is जहा जे सेमिति छाड दबा एटा भी जमा नुहे लोअर और एक्सपेक्टेशन ताकत एक्सपेक्टेशन रखिबोनी एटा भी जमा नुहे रे तीनटा हलान तो ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट आंसर कोन कहि रे रिफ्लेक्ट ऑन आवर टीचिंग एंड फाइंड वे टू इंप्रूव द स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट तो ऑप्शन नंबर डी पिला माने करेक्ट आंसर
बुझिगला रे ताले क्वेश्चन नंबर 7 को जिबा इन द इंक्लूसिव क्लासरूम ए टीचर डैश इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान और से पढ़ो पिलाने क्वेश्चन कहला इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम ए टीचर डैश इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान should not prepare na should occasionally prepare na should actively prepare na should discourage the preparation of कहला inclusive classroom रे टीचर हमर इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान करिवो ना करिवोनी हमको पचारिछ हला इंडिविजुअलाइज प्लान से करिवो ना करिवोनी पिला माने पचारिछ हला इंक्लूसिव क्लासरूम माने से पिला कोन कहते समस्त को हम इंपोर्टेंस दबा हला तो समस्त नीड को हमें बुझी के चलीबा आ पिला माने कोन रे इंडिविजुअल डिफरेंस एक्जिस्ट समस्त इंडिविजुअल डिफरेंस जेट रहउची समस्त समान प्रकार रे सिखिबेनी समस्त समान प्रकार रे पढिबेनी तेणु आम इंडिविजुअलाइज प्लान टीचर से कोन निहाती सब बेले पिला माने प्रिपरेशन करी बुझिगला तो कोन बारे शुड एक्टिवली प्रिपेयर ऑप्शन नंबर ऑप्शन ए शुड नॉट प्रिपेयर जमाने ऑकेजनल प्रिपेयर बेले बेले करे काई सबले करने असुविधा कोन शुड डिस्करेज काई डिस्करेज करे तो ऑप्शन नंबर सी प्लान है करेक्ट आंसर क्वेश्चन 8 को जिबा क्वेश्चन 8 कोन देख रे द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए चिल्ड्रन विथ dyslexia प्लान डिसलेक्सिया द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए चिल्ड्रन विथ डिसलेक्सिया इंक्लूड डेस तो गोटे छुआ को डिसलेक्सिया हेज ताले कोन तारा प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स कोन तबे केमिति जानियो गोटे छुआ डिसलेक्सिया हेज बोली अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर ना डाइवर्जेंट थिंकिंग ना fluency in reading inability to read fluently engaging in repetitive locomotor action तो पिलाने dyslexia माने रीडिंग रिलेटेड डिसऑर्डर रीडिंग रिलेटेड डिसऑर्डर कोड अछि ऑप्शन नंबर सी रे अछि तो मारि दियो आउ किछि देखिबा में हमर दरकार नाही मारि दिया से बुझियला रे बुझि पाले हम तो क्वेश्चन पे 8 आंसर हला ऑप्शन नंबर सी तापर जिबा हम in the constructivist framework learning is primarily based भयंकर क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन कहला constructivist framework अनुसार लर्निंग ता पिला माने प्राइमरी केमिति होबा दरकार बेस्ड ऑन रूट मेमोराइजेशन कहला constructivist framework अनुसार लर्निंग ता पर रूट मेमोराइजेशन होबा दरकार घोषा को भित्ति करी होबा दरकार centered around reinforcement ना awkward through conditioning ना focus on the process of meaning making तो पिला ने constructivist framework कोन कहूची रे से कहूची से पिला ने स्टूडेंट रो प्रायर नॉलेज ऊपर पिला ने से फोकस करूची से पिला माने छुआर प्रीवियस नॉलेज ऊपर से गुरुत्व आरोप करूची से कहूची कोन प्रीवियस नॉलेज को बेस करके छुआ माने नुवा नॉलेज कंस्ट्रक्शन करी आ लर्निंग दा केमिति होबा दरकार लर्निंग शुड बी मीनिंग मेकिंग हला लर्निंग दा मीनिंग मेकिंग होबा दरकार मीनिंगफुल होबा दरकार एगुडा को के कहूची पिला ने कंस्ट्रक्टिव फ्रेमवर्क कहूची आ से काहा को विरोध करूची से रूट मेमोराइजेशन को विरोध करूची हला रेनफोर्समेंट को विरोध करूची एगुडा को से विरोध करूची आ कोन कहूची से कहूची टीचर शुड एक्ट एज ए फैसिलिटेटर आ से कोन कहूची चिल्ड्रन विल एक्टिवली एंगेज इन द स्टडी हला चिल्ड्रन आर तो एक्टिव नॉलेज सी करते एक कथा गुडा को की कहूची पिला ने कंस्ट्रक्टिव फ्रेमवर्क कहूची कोन देखो रे कहला हमर कंस्ट्रक्टिव फ्रेमवर्क अनुसार लर्निंग ता काहा को बेस करके दरकार रोड मेमोराइजेशन जमा नुहे रेनफोर्समेंट को से विरोध करे कंडीशनिंग को से विरोध करे कंडीशनिंग माने कोन माने करो फॉर एग्जांपल मन को तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की अछि फॉर एग्जांपल पिला ने के देह को नबनी है मन को तुम मन पुओ पिला एग्जांपल हो तुम गर्लफ्रेंड कहला तुम जब एथरे बीएड क्वालिफाई करे मु तुम भल पाइबी बुझिला बा मन करो गोटे झियो को ता बॉयफ्रेंड कहला तू जब एथरे बीएड क्वालिफाई करे मु तोरे भल पाइबी एडाला कंडीशन कि जे कंडीशन रखला तो पिला माने एगुडा को नुहे तो हमर कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क को विरोध करूछि त पिला माने एगुडा को नुहे आंसर करला ऑप्शन नंबर डी हला फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग ऑप्शन नंबर डी पिला ने करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 को जिबारे क्वेश्चन नंबर 10 कहिला which of the following statement about learning is correct from the constructivist perspective लाने सेमिति क्वेश्चन है constructivist perspective अनुसार लर्निंग को लेई कोडा प्लान ठीक बोला लर्निंग शुड इज ए प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन और रिकॉल ना रिकॉल नुहे रिकॉल को से विरोध करे लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ रोड मेमोराइजेशन नुहे लर्निंग इज कंडीशनिंग लिखि देला काटी दियो लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द नॉलेज बाय द एक्टिव एंगेजमेंट पिला माने सेतलो बुझे कसे तो माने एक्टिवली एंगेज हे छुआ माने एक्टिवली एंगेज हे कि निजर प्रीवियस नॉलेज को बेस करके पिला ने नॉलेज कंस्ट्रक्शन करी एटा के कहूछ रे कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव कहूछ तो ऑप्शन नंबर डी हे गला पिला ने करेक्ट आंसर हला चलो क्वेश्चन नंबर 11 जीवा क्वेश्चन 11 दला रे बोला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस प्रमोट द मीनिंगफुल लर्निंग तो पिला ने चारिटा प्रैक्टिस लिखा जाई रे एतर को प्रैक्टिस पिला ने मीनिंगफुल लर्निंग को कोन करूछ रे प्रमोट करूछ कॉर्पोरल पनिशमेंट कोऑपरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कांस्टेंट कंपैरेटिव इवैल्यूएशन तो पिला माने या भितर कोडा कोन करूछ रे मीनिंगफुल लर्निंग प्रमोट करूछ कोन पिला माने ऑप्शन चारटा पढो देख आंसर दियो न करे पहले हम कहिबी
कहला या भीतर कोटा पिला माने मीनिंगफुल लर्निंग को कोन करछ प्रमोट करूछ हला कॉर्पोरल पनिशमेंट पनिशमेंट दबानी ना कोऑपरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट ठीक अछि हला कंटीन्यूएशन कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन एटा भी ठीक अछि कांस्टेंट कंपैरेटिव इवैल्यूएशन ना कंपैरेटिव इवैल्यूएशन करिवे कंपैरेटिव इवैल्यूएशन करले हमर पिलाने मीनिंगफुल लर्निंग हबन तो कोन अब ऑप्शन नंबर 2 भी ठीक 3 भी ठीक कोठी से देखो सी रे अछि तो सी रे पिला माने आंसर अछि बोथ आर करेक्ट 2 भी करेक्ट 3 भी करेक्ट हला चला आगु बुझो तापर कहला पिला माने which of the following is are the example of secondary socializing agent पिला माने बढ़िया क्वेश्चन डाटा हला तो सोशलाइजेशन पिला माने सोशलाइजेशन दुईटा एजेंट थारे गोटेला प्राइमरी एजेंट गोटेला सेकेंडरी एजेंट बुझिला तो गोटे कजे एक्टिव एजेंट गोटे कजे पासिंग एजेंट बा माने सेटा मन रखो गोटेला प्राइमरी एजेंट गोटेला सेकेंडरी एजेंट प्राइमरी एजेंट कोन छुआटा माने पूरा छुआर इमीडिएट एनवायरनमेंट जुडा रहिला माने पेरेंट्स रहिला तार फैमिली रहिला तो सेगुडा पिला माने कहा भितर पळेबरे प्राइमरी पिला माने पळेबा प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंट माने छुआटा जो माने कांटेक्ट रे डायरेक्ट आसु आ सेकेंडरी केरे ताकू छाड़ी के आउजे रहले सोसाइटी स्कूल तो सेगुडा को जाय पिला ने सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंट ना देखरे ये पिला माने सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंट हेबे फैमिली नाइबरहुड ना फैमिली तो पिला ने प्राइमरी रे जाउची फैमिली मीडिया फैमिली पिला माने प्राइमरी रे जाउची तेनु नुहे स्कूल एंड मीडिया यस ऑप्शन नंबर सी स्कूल एंड मीडिया दीज आर द पिला ने सेकेंडरी एजेंट पिला माने करे फैमिली तार पेरेंट्स तार नाइबरहुड ए माने सब पिला ने प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन हला एई माने को छाड़ी देगी माने फैमिली पेरेंट्स और नाइबरहुड को छाड़ी के जो मान रहिले समस्त कहे कोन सेकेंडरी हला तो पिला माने हमर सेकेंडरी के स्कूल और मीडिया हले सेकेंडरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन बुझिला 13 नंबर दिबा क्वेश्चन नंबर 13 इन प्रोग्रेसिव क्लासरूम रे कोन हिथाय नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर इज रिसीव्ड पैसिवली बाय द knowledge is reproduced by the learner as it is knowledge is recalled by the learner as per the instruction of the teacher मतलब प्रोग्रेसिव क्लासरूम रे कोन हिथाय तो प्रोग्रेसिव क्लासरूम पिला माने कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव को पिला माने सब फॉलो करे माने सीए कोन कहू से प्रोग्रेसिव क्लासरूम रे भी छुआ माने निजे एक्टिव थांडे छुआ माने निजे पिला ने नॉलेज कंस्ट्रक्शन करन ताले देखो पिला माने कोठी छुआ निजे नॉलेज कंस्ट्रक्शन करूछ ऑप्शन नंबर ए रे दैछे नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर तो ऑप्शन नंबर ए हेला करेक्ट आंसर आरे गुडा को पढि दबा नॉलेज इज रिसीव्ड पैसिवली ना पैसिव से नुहे छुआ पूरा एक्टिव हबो नॉलेज इज रिप्रोड्यूस्ड बाय द लर्नर जहां पढिया से उतारि दो हेटा भी भूल लर्नर रिकॉल भी करिवनी हला माने प्रोग्रेसिव एजुकेशन कोन होबरे नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर ऑप्शन नंबर ए मन रखिबा प्रोग्रेसिव क्लासरूम काहा को फॉलो करू जे लर्नर सेंटर्ड अप्रोच को से फॉलो करू हला को अप्रोच पिला माने लर्नर सेंटर्ड अप्रोच को से फॉलो करू जे टीचर सेंटर नुहे क्वेश्चन 14 को जिबा हला कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इंक्लूडेड पिला ने कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन काहा को इंक्लूड करू ओनली फॉर्मेटिव असेसमेंट केवल फॉर्मेटिव असेसमेंट को से इंक्लूड करूची ना ओनली समेटिव असेसमेंट ना नाइदर फॉर्मेटिव नॉर समेटिव असेसमेंट ना बोथ फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट यूजिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ स्ट्रेटजी तो पिला ने कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन फॉर्मेटिव एंड समेटिव बोथ को पिला माने से नेकी चले बहुत प्रकार स्ट्रेटजी को से नेकी चले ताको टेस्ट करिया पे हला केवल जे खाली पेन पेपर से टेस्ट करेनी विभिन्न प्रकार स्ट्रेटजी विभिन्न प्रकार वैरायटी ऑफ टेक्नोलॉजी से यूज करके जे पिला ने छुआ माने को टेस्ट करि था हला तो ऑप्शन नंबर डी हला करेक्ट आंसर बुझला 15 जीवा क्वेश्चन 15 दला इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम टीचर शुड डेस प्लान इंक्लूसिव क्लासरूम रे टीचर कोन करिवे हला बिलीव दैट एवरी चिल्ड्रन हैज द पोटेंशियल टू लर्न एज पर देयर एबिलिटी एंड स्ट्रेंथ द सो एन एटीट्यूड ऑफ पिटी एंड सिंपैथी टुवर्ड्स द डिसेबल्ड लर्नर यूज अ लेवल सच एज हैंडिकैप्ड चाइल्ड रिटार्डेड चाइल्ड टू कैटेगराइज द चिल्ड्रन पे अटेंशन ओनली ऑन द गिफ्टेड एंड टैलेंटेड लर्नर तो इंक्लूसिव क्लासरूम रे टीचर कोन है इंक्लूसिव एजुकेशन बा इंक्लूसिव क्लासरूम कोन रे इंक्लूसिव क्लासरूम में कोन पिला माने इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट इरेस्पेक्टिव ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी समस्त पिला ने गोटे क्लासरूम रे पढुथिबे बुझिला आ त टीचर सेठी कोन करबो रे समस्त के समान दृष्टि रे देखिबो हला से कोन करे डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन दबो इंडिविजुअलाइज प्लान से करिवे एगुडा को पिला माने से करिवे हला तेनु से पढी टीचर कोन करिया दरकार कला बिलीव दैट एवरी चिल्ड्रन हैज द पोटेंशियल टू लर्न ठीक अछि as per their ability and strength ऑप्शन नंबर ए हला करेक्ट आंसर इंक्लूसिव आज क्लासरूम में टीचर कोन खबरे ये बिलीव रखिबो कि सब चिल्ड्रन माने कोन ताको स्ट्रेंथ अनुଯାयी ताको एबिलिटी अनुଯାयी से माने भलो परफॉर्म करि परिबे बा से माने पढि परिबे से कहि परिबोनी कि ये भलो पढिबो से खराब पढिबो को प्रायोरिटी दबो ताको प्रायोरिटी दबनी एमरी से करिबे ऑप्शन बी कोन दैछे सोन एटीट्यूड ऑफ पीटी एंड सिंपैथी टू डिसेबल्ड लर्नर को सिंपैथी देखिबो जमा नुहे पूरा भूल ऑप्शन नंबर 3 गले लेवल करिवो जमा इंक्लूसिव क्लासरूम रे छुआ को लेवल करि परिबानी ना ओनली ऑन गिफ्टेड लर्नर केवल गिफ्टेड लर्नर ऊपर भी हमें पिलाने फोकस करबा नाही त तीनटा ऑप्शन पिलाने भूल अछि ऑप्शन नंबर ए हला हमर करेक्ट आंसर
16 नंबर जीवा 16 नंबर देखो रे टीचर कैन एनकरेज क्रिएटिव लर्नर इन क्लासरूम बाय डेज तो गोटे टीचर क्लासरूम रे तार क्लासरूम रे क्रिएटिव लर्नर मान को केमिति एनकरेज करिवो एम्फासाइज कन्वर्जेंट थिंकिंग एम्फासाइज डाइवर्जेंट थिंकिंग encourage multiple perspective and appreciating the original idea discouraging the student from the talking risk from taking risks and undertaking challenges तो पिला माने वन द क्रिएटिव लर्नर मानकु से टीचर केमिति एनकरेज करबे हमको पचारि हला क्रिएटिव लर्नर मानकु से केमिति एनकरेज करबे केमिति करिवो पढ ऑप्शन फास्ट एम्फासाइज कन्वर्जेंट थिंकिंग पिला माने क्रिएटिविटी कन्वर्जेंट थिंकिंग सहित ये नुहे कन्वर्जेंट थिंकिंग सहित इंटेलिजेंस रिलेटेड इंटेलिजेंस इज रिलेटेड विथ कन्वर्जेंट थिंकिंग एटा भूल डिस्करेज डाइवर्जेंट थिंकिंग काई पिला डाइवर्जेंट थिंकिंग बस एनकरेज करिया कथा काहे कि डाइवर्जेंट थिंकिंग इज रिलेटेड विथ क्रिएटिविटी जण पिला ने एटा जदी से एनकरेज करिया हेइ थांदा ताल पिला ठीक थांदा ऑप्शन नंबर बी भी फैला एनकरेज मल्टीपल पर्सपेक्टिव एंड अप्रिशिएटिंग ओरिजिनल आइडिया यस पिला माने गोटे प्रॉब्लम रो से मल्टीपल पर्सपेक्टिव रो आंसर जदी छ माने दोचन ताको से एनकरेज करियो माने डाइवर्जेंट थिंकिंग से एनकरेज करियो तो ऑप्शन नंबर सी पिला ठीक हला ऑप्शन नंबर डी पे जिबा दरकार नै ऑप्शन नंबर सी हे गला हमर 17 नंबर क्वेश्चन 17 कोन कहला बढ़िया क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट लर्निंग या फिर कोडा पिला लर्निंग को अफेक्ट पकाए इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट इमोशनल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट पेडालॉजिकल स्ट्रेटजी ना सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टूडेंट या भीतर कोडा पिला माने लर्निंग को अफेक्ट पकाए देखो पिला माने ऑप्शन पढा बढ़िया क्वेश्चन करि परिबो पहला पिला माने देखो लर्निंग को किया अफेक्ट पकाए इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट अफेक्ट पकाए हां पकाए तो एक नंबर ठीक अछि इमोशनल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट पकाए हां पकाए पेडालॉजिकल स्ट्रेटजी में केमिति पढौछंती सेटा भी अफेक्ट पकाए हां पकाए सोशल एंड कल्चरल कॉन्स्टेंट प्रभाव पकाए हां पकाए सबुडा का अफेक्ट पका देना ऑप्शन नंबर डी हे गला पिला करेक्ट आंसर हला जदी सबुडा का अफेक्ट पकेले तो ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर आके देखिबन नै हला चलो क्वेश्चन नंबर 18 दिबा Now, which of the following statement about intelligence is correct? Intelligence को नहीं किए चारिटा भीतर कोटा पिलाने ठीक अछि. Intelligence is a multi-dimensional involving several ability. Intelligence is the ability to think convergently. Now, intelligence is a relative permanent change in the behavior as a result of experience. Intelligence is hereditary trait that involves the mental activities such as memory and reasoning. एक को नहीं की पिलाने intelligence को नहीं के कोटा correct अछि हम बचाई. Intelligence को नहीं के कोटा ठीक अछि. तब पिलाने ठीक अछि. पिलाने कौन खबर तो पिला माने इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल इन्वॉल्विंग सेवरल एबिलिटी पूरा ठीक अछि ऑप्शन नंबर ए पूरा ठीक अछि इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू थिंक कन्वर्जेंटली खाली कन्वर्जेंटली थिंक कल हे हम इंटेलिजेंस को हेडा नै खाली हम थिंक कर देले हे जवाना त एटा पिला ने पूरा करेक्ट नै तो ऑप्शन नंबर बी टा मोस्ट अप्रोप्रिएट हे परिबो नै तरा इंटेलिजेंस इज द रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर एटा इंटेलिजेंस नो इट इज लर्निंग इज द रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर एटा पूरा भूल हे गला इंटेलिजेंस इज हेरिडिटरी ट्रेट एटा केवल हेरिडिटरी ट्रेट नुहे पिला ने हेरिडिटी एनवायरनमेंट बोथ प्रभाव ता पर पड़े हला त पिला आंसर करला ऑप्शन नंबर 1 बढ़िया क्वेश्चन थिला कंफ्यूजिंग थिला 19 नंबर जीरो ए टीचर शुड डैश टीचर पिला ने कोन करिया दरकार communicate that she respect and value all the culture in the classroom maximize comparison among the student promote student belonging to the certain culture and ignore the cultural difference and diversity among the student the teacher भीतर कोन करिया दरकार घरे बहुत सहजिया क्वेश्चन किछ कहया नै त सारंगी सार कर दबो टीचर कोन करिबारे से सब कल्चर को रेस्पेक्ट दबो सब को से वैल्यू करिवो समस्त को इक्वल नजर रे देखो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट तीनटा पिला ना नेगेटिव ऑप्शन अछि 20 नंबर देखो now which of the following construct does the right to education act 2009 advocate तो पिला माने जो right to education 2009 या मतलब कोटा को पिला ना एडवोकेट करि छै mainstreaming ना integrated education ना inclusive education ना segregation कोटा पिला ने करि छै जो आरटी 2009 रहिला राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 से पिला काहा को से फोकस करू रे आ काहा पर से बेसी गुरुत्व आरोप करैतला इंक्लूसिव एजुकेशन पर गुरुत्व आरोप करैतला है ऑप्शन नंबर सी पिला में करेक्ट आंसर एटा गोटे कोन नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन थिला या पूर्व जते सारे करथिले सब अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ना बुझिले करि परियो 21 एटा पिला ने से नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन माने कोन फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पिला द राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट हैज बीन इनेक्टेड इन व्हिच ईयर तो पिला माने राइट टू एजुकेशन सॉरी राइट ऑफ ए पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट केबे पिला माने हितला बढ़िया क्वेश्चन परीक्षा बारंबार आसे
1995 1919 2016 ना 1992 द राइट ऑफ पर्सन विथ डिजेबिलिटी एक्ट केबे पिला माने हेइथिला आराम से करि परिबो केबे हेइथिला एटा पिलान तबे दबो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन तुम आराम से करि परिबो एटा तमे माने मते आंसर दबो मु पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन को जाउछि हला बढ़िया क्वेश्चन तब चल रे पहिला बड़ा क्वेश्चन 22 the children with individual difference should be taught in a school having teachers test तो पिला माने जो छुआ मान को तो इंडिविजुअल डिफरेंस रहला से छुआ मान को को स्कूल ले पढ़ेगा हला बा केमिति स्कूल में पढ़ेगा दरकार बा एमिति स्कूल में पढ़ेगा जोटी टीचर माने केमिति हेबा दरकार trained to use the different pedagogy to meet their diverse learning needs the trained to teach each children with specific individual difference the trained to make them homogeneous learner to teach in different section of the class based on their individual difference तो पिला माने our there are children with individual difference should be taught in the school having teachers of death तो जो individual difference जो छुआ मान को भीतर अछि से छुआ मान को केमिति स्कूल ले पढ़े केमिति स्कूल ले पढ़े बड़ा क्वेश्चन बुझो बुझी के आंसर दियो देखो रे पिला माने तला कि रे हमर छुआ मान को भीतर इंडिविजुअल डिफरेंस अछि हला तो सेही जो इंडिविजुअल डिफरेंस छुआ मान केमिति पढ़िया तो ट्रेन टू यूज डिफरेंट पेडागोजी टू डाइवर्स नेट तो पिला माने इंडिविजुअल डिफरेंस पता देछि ऑप्शन नंबर एटा इंडिविजुअल डिफरेंस पता किछि कोने ट्रेन टू चिल्ड चिल्ड्रेन विथ स्पेसिफिक हाँ तो आमर पिला छुआ मान इंडिविजुअल डिफरेंस अच्छी जेहेतु नाकर पिला मान सब छुआ भीतर अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंस अच्छी आम से केमी स्कूल छाड़ा जो मैंने कि ईच इंडिविजुअल स्पेसिफिक इंडिविजुअल डिफरेंस को मीट करने जो मैंने ट्रेंड होते सेमिनि टीचर जो स्कूल अच्छे छाड़ा ऑप्शन नंबर बीटा से ठीक अच्छे बुझीगला तमर स्पेसिफिक इंडिविजुअल डिफरेंस को जो ट्रेंड टीचर अच्छे मनकर गीत छुआ भल गाँव अलग टीचर छुआ भल नाचुंट अलग टीचर छुआटा भल खेलुँ अलग टीचर एमि टीचर जो थे तो से स्कूल छाड़ा ऑप्शन नंबर बी पे करेक्ट आंसर 23 नंबर को जीवा पहला द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 ensure that the right of the children with disability to free education from desk हमर जो पिला माने राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 आसीतला तो जो डिजेबल छुआ मान रहिला से माने केते वर्ष रे केते वर्ष पर्यंत फ्री एजुकेशन पाए बोली से कहिसे 3 ରୁ 18 ना 6 ରୁ 14 ना 6 ରୁ 22 ना 6 ରୁ 18 कोन हम पिला माने तो डिजेबिलिटी जो मान रहिला हैला बट डिजेबिलिटी माने कोन समस्त पाइथिले माने 6 ରୁ 14 ହେଲା ସବୁ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ 6 ରୁ 14 ଥିଲା पर्सनल डिजेबिलिटी ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ପିଲା 6 ରୁ 18 ଥିଲା ମୋର ମନେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ऑप्शन नंबर डी टा प्राय 99% करेक्ट हैला तो पिला माने हां एटा ही करेक्ट हबो 6 टू 18 थिला जदी किसी करेक्शन करिया था नेक्स्ट क्लास में करेक्शन कर देबे एबे पिला माने तो ऑप्शन नंबर डी को नहीं चलो चलो एबे तो ऑप्शन नंबर डी को नहीं चलो कारण हां एटा ही हबो 6 ରୁ 18 कारण आउ समस्त 6 ରୁ 14 डिजेबल चिल्ड्रन को 4 वर्ष अधिक थिला द कांसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वोशिएंट वर डेवलप्ड बाय दिस पिला ने इंटेलिजेंट क्वोशिएंट रो कांसेप्ट के देखिले रे हला फार्मूला जने देखिले कांसेप्ट जने देखिले कांसेप्ट के देखिले से हम पचारे द कांसेप्ट इज गिवन बाय दिस The concept of intelligence test was given by test. इंटेलिजेंस क्वोशिएंट आईक्यू रा कांसेप्ट के देते विलियम स्टोन देथिले हला आईक्यू रा कांसेप्ट देथिले विलियम स्टोन के फार्मूला के देथिले लुई स्टोरमैन त मन रखिबो अब चलो तपर जीवा फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट प्लान के देथिले फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट सेटा लिखि दो फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट अब चलो जीवा पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन सर कहला द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 derives its understanding from this तो पिला जो एनसीएफ 2005 पुरा ने काहा को बेस करी खैछि कॉग्निटिव थ्योरी को बेस करी खैछि ना ह्यूमनिज्म को बेस करी खैछि ना बिहेवियरिज्म को बेस करी खैछि ना कंस्ट्रक्टिविज्म को बेस करी खैछि काहा को बेस करी खैछि रे
पिलाने एनसीएफ 2005 का बेस करी हेतरे पिलाने कंस्ट्रक्टिव विजन को से बेस करी हेतला ऑप्शन नंबर डी हला पिलाने करेक्ट आंसर से कोजला चोन निले नॉलेज कंस्ट्रक्शन करिवे तापर से फोकस करू तापर कोन देला पिला द चिल्ड्रन इन ए क्लास कैन बी कंसीडर्ड टू मोटिवेट इफ डेस द छुआ माने गोटे क्लास में मोटिवेट हेछंदी बोले हम केमे जानिया केते बेले कहिबा they ask a question seeking clarification from the teacher, they come to the school neatly dressed in uniform, they maintain discipline in their class, the all are regular in attendance. या भीतर कौन देखिक हम कहिया छुआ माने मोटिवेट अछंदी बोली कौन देखि कहै पिलान छुआ माने मोटिवेट अछंदी बोली रे छुआ माने पिलान जे क्वेश्चन पचारथुबे हला आउ क्लारिफिकेशन टीचर बा खोजुथबे ता माने से माने पाठ पढाटे मोटिवेट अछंदी खाली से नीट यूनिफॉर्म में पळाइने हबनी बा डिसिप्लिन के बसने हबनी बा रेगुलर अटेंडेंस पे बसले हबनी हला मन कर आमे रेगुलर अटेंडेंस पाई हमर अटेंडेंस नेसेसरी से पे कॉलेज ता माने ने के मोटिवेट पढिया पे बुझि परछ तो तेनो पिला माने एगुडा किछि न ऑप्शन नंबर ए हला करेक्ट आंसर जदि छुआ माने क्वेश्चन पचारि छंदी हला डिस्कशन करू छंदी ता माने से माने पाठ पढाटे मोटिवेट 27 जीवा now which of the following statement about the progressive education explain education is life itself ये जो education is life itself ये जो statement ता पिला ने क्या क्या बुझोइ छे life is a true educator ना ना माने यार मीनिंग कोन ये बचे हम full education should be continue as long as possible school are not required children can learn from their life experience education and school should be reflect on the social and natural world तो पिला ने गुड आंसर हम education is life itself माने कोन एफेक्ट education is life itself life is a true educator ना education life itself या कोनी the school education should be continuous as long as possible खाली कोन छ पढु दिबे चाकरी करी नेटाई भूल school are not required केम दिन न हले पढिए केम ऑप्शन 3 भी भूल education in school should be reflect on the social and natural world yes option number d जोड़ा से पढु छी तार डेली बिहेवियर रे तार नेचुरल वर्ल्ड रे द सोशल वर्ल्ड रे शुड रिफ्लेक्ट होता दरकार ऑप्शन नंबर डी प्लान कर 10 नंबर जी बारे the zone of proximal development refers to this zpd zone of proximal development का को कहबा the point in learning when support can be withdrawn the phase when maximum development is possible the developmental phase when the child takes complete responsibility for a learning and a context which child can almost perform a text on their own and with the help of and with the right level of support तो पिलाने जेडपीडी माने कोन जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट माने कोन हमसे से पछरे कोन पिलाने जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट माने त माने जानि छ सबरे कोन रे तो छुआ जोटा अचीव करि परिबो कोन ताको जदि सिके सपोर्ट दबा से जोटा अचीव करि परिबे सेटा को जेडपीडी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट ऑप्शन दै ऑप्शन नंबर डी टा पिला माने करेक्टली 29 जिबा द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस हैज दैट तो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस पिलाने कोन कहउछ रे इंटेलिजेंस कैन बी मल्टीप्लाइड विथ इफेक्टिव पडाउछ intelligence can be readily accelerated intelligence can be several kinds the paper pencil tents are not helpful तो पिला माने हमर मल्टीपल इंटेलिजेंस भीतर कोन कहूची हमक पचारि कोन कहूची रे मल्टीपल इंटेलिजेंस तुम देखि कह मल्टीपल इंटेलिजेंस पिला ने कोन कहूची मल्टीपल इंटेलिजेंस कहूची गोटे प्रकार इंटेलिजेंस में सेवरल काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस ऑप्शन नंबर सी ये देखले पिला मल्टीपल इंटेलिजेंस कांसेप्ट हवार्ड गार्डनर पिला ने देखले हवार्ड गार्डनर देखले कार कांसेप्ट रे मल्टीपल इंटेलिजेंस कांसेप्ट से पिला देखले ये की बुक लिखले पिला ने फ्रेम्स ऑफ माइंड हवार्ड गार्डनर बुक्स लिखि देले फ्रेम्स ऑफ माइंड क्वेश्चन पिला आसी जाय पारे लिखि देबो काटी जिबा पहिला which of the following is related to continuous and comprehensive evaluation ये भीतर कोटा पिला माने continuous and comprehensive evaluation तो related it is useful to label the children as slow poor and intelligent it has been mandated by the right to education act of india it is an integral part of teaching learning process it focus on the child's achievement in different learning area तो पिला ने ये भीतर कोटा continuous and comprehensive evaluation से तो related हम केटा पसरी कोटा तासो related कोटा related तो बाहर कर आराम से पूरा रिलेटेड हो पिला माने आर्टिफिशियल पूरा रिलेटेड रे पहिला इट इज यूजफुल टू लेवल पिला से लेवल करिया था केबे पहिला इट इज मैंडेटेड बाय द राइट टू एजुकेशन हां राइट टू एजुकेशन एक्ट पिला माने मैंडेट कर देछि कि सब स्कूल ले कंपल्सरी सीसीए लागो बेटा ऑप्शन नंबर बीटा ठीक अछि इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एटा भी ठीक अछि इट फोकस ऑन द चाइल्ड्स अचीवमेंट इन मेनी डिफरेंट एरिया एटा पिला ने ठीक अछि तीनटा ऑप्शन पिला ने ठीक अछि
इज रिलेटेड देखिए ना तो रिलेटेड माने तीनटा ही ठीक अछि कि बेसी जदी एप्रोप्रिएट देखिया प्लान ऑप्शन नंबर बी संगे जिबा काहे कि एटा प्लान लागू हितला ना कारण पर करेक्ट स्टेटमेंट अछि कि एटा तोरे से लागू हितला हला एटा क्वेश्चन ए हवर थिला नॉट रिलेटेड त तीनटा को रिलेटेड अछि नॉट रिलेटेड हितला ऑप्शन बी संगे जाइता हला नॉट रिलेटेड दबार थिला से रिलेटेड देरी हो ठीक अछि देरी छी हो किछ असुविधा नै त ऑप्शन नंबर बी टा बेसी करे नै दिटा भूल नै हला कि नॉट रिलेटेड हितला ऑप्शन नंबर ए संगे जाइता क्वेश्चन टा बोले नॉट रिलेटेड थिला बाय भूल रिलेटेड लिख दिछन देखिबा 31 नंबर दिया तो giftedness in child can be attributed as the giftedness को attribute करू a discipline routine and interplay between hereditary environment a resource rich environment and successful parents तो giftedness कोन हो पिला माने giftedness प्लान कोटा सर इट इज एन interplay between hereditary environment बुझला तो giftedness हमर discipline routine हुए the resource is rare environment में successful parents के लिए ऑप्शन नंबर बी लेफ्ट लाने करेक्ट है बुझला एटीट्यूड कुछ बारे which one of the following way is not a suitable way to help the hyperactive children to learn the hyperactivity ADHD student मान रहिले सेमान को पढ़ाया ପାଇଁ कोटा गोटे suitable strategy नुहे तला reprimanding them often for being restless breaking up a text into small and manageable segments offering alternative way of learning and including physical activity in their daily schedule ADHD छुआ को पढ़ाया ପାଇଁ या भीतर कोटा गोटे suitable strategy नुहे हमको से पचारछि त ADHD स्टूडेंट पिला मन पढ़ाया ପାଇଁ कोटा suitable strategy नुहे रह बले देखो बिना क्वेश्चन गोटे आंसर दियो कौन करिया पिला माने कहला कोटा गोटे suitable way नुहे हम पचरे छिए भीतर suitable कोटा नुहे रे पिला माने कहला देखो पढ़िया गोटे ला reprimanding them often being restless नेगेटिव ऑप्शन अछि breaking up a text into small and manageable segment एटा भलो कथा गोटे offering alternative way of learning एटा ही भलो कथा including physical activity and daily schedule एटा भी ठीक कथा ऑप्शन नंबर बी टा प्लान सॉरी ए टा प्लान ठीक न ना एटीएसटी स्टूडेंट पिला को पढ़ाया ପାଇଁ हम ऑप्शन नंबर ए माने एई स्ट्रेटजी यूज करि परिबा नाही तो 32 नंबर प्लान कोन हला ऑप्शन नंबर ए हला 33 नंबर को प्लान जिबा देखियो कोन दैछि हला 33 नंबर जिबा 33 कोन दैछि रे how can a teacher encourage a student to be intrinsically motivated towards the learning for the sake of learning तो पिला माने या भीतर टीचर कोन करिवो रे या भीतर को स्ट्रेटजी टा यूज करिवो छुआ मान को पाठ पढ़ा पई इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड करिया पई by giving competitive test by supporting them in setting individual goal and their mastery by offering tangible rewards to and such as topics by including anxiety and fear तो पिला ने competitive test देले से intrinsically motivated हबनी रिवार्ड देले पिला माने हबनी एटा एक्सटर्नल मोटिवेशन हे जाउची तो डरेइबा एटा भी हबनी हबो कल ऑप्शन नंबर बी पिला माने हबो एटा करेक्ट आंसर बुझला ऑप्शन नंबर बी पिला हला करेक्ट तापर क्वेश्चन को जिबा 34 को कोन कहले देखो रे इन एन एलिमेंटरी क्लासरूम an effective teacher should aim at the students to be motivated as कहला पिला माने गोटे एलिमेंटरी क्लासरूम रे गोटे इफेक्टिव टीचर पिला माने कोन एम करियो छुआ माने केमिति मोटिवेट हवा दरकार कहला टू रोड मेमोराइजेशन सो दैट दे बिकम गुड एट रिकॉल by using punitive measures so that they respect the teacher to perform so that they are good in marks at the end of the year examination to learn so that they become curious and love the learning its own sake for its own sake तो पिला माने गोटे इफेक्टिव टीचर या भितरु कोन चाहिबो छुआ माने केमिति मोटिवेट हवा दरकार छुआ माने केमिति मोटिवेट हवा दरकार रे माने एमिति मोटिवेट हवा दरकार जेमि से ताका पाठ पढा नै क्यूरियस थिबे तो पाठ पढा से भल पाउथिबे हला निज पई पढुथिबे बुझियला ना कार फोर्स पई पढुथिबे बा रिवार्ड पई पाउथिबे बा क्लास रे भल मार्क रखे पई पढुथिबे सेमिति नुहे ने किछि पाठ जानिया पई पढुथिबे तो ऑप्शन नंबर डी पिला माने को कोन करेक्ट तापर चलो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन
Well, according to Lev Vygotsky, the primary cause of cognitive development is this. बढ़िया क्वेश्चन पिला माने कहला लेव Vygotsky को अनुଯାयी बा तांको कथा अनुଯାयी हमर प्राइमरी कॉज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कोडा सोशल इंटरेक्शन द एडजस्टमेंट ऑफ मेंटल स्कीमा द स्टिमुलस रेस्पॉन्स पेयरिंग ए इक्विलिब्रेशन पिला माने एडजस्टमेंट ऑफ मेंटल स्कीमा एटा पियाजेट कर कांसेप्ट रे स्टिमुलस रेस्पॉन्स पिला माने कहार पेयर रे हमर इवन पावलोव कर कांसेप्ट इक्विलिब्रेशन भी पिला ने पियाजेट कर कांसेप्ट Vygotsky कहाँ पर स्ट्रेस करथिले रे सोशल इंटरेक्शन एंड कल्चर ऊपर स्ट्रेस करथिले तो ऑप्शन नंबर ए पिला माने करेक्ट आंसर बुझे ना तो ऑप्शन नंबर ए हमें पाई गले करेक्ट आंसर एबे हम जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन बॉर्डर अछि कोन दिस देखरे ले 5-year-old girl talk to herself while trying to fold a t-shirt. Which of the following statement is correct in the context of behavior displayed by the girl? गोटे 5 वर्षर झीटे सी कौन करे तार टी सर्ट को जो से फोल्ड करके रखुचे से निज निज संगे कथा बुझेगा ताहले से निज संगे कथा ताहले पिला माने ए चारिटा ऑप्शन भितर कोडा ठीक हबो जीन पियाजेट वुड एक्सप्लेन इट्स एज ए इगोसेंट्रिक स्पीच while Lev Vygotsky would explain this as the child's attempt to regulate her action through private speech. Jean Piaget would explain it as social interaction, while Lev Vygotsky would explain this as exploration. The Jean Piaget and Vygotsky would explain the child's attempt to imitate her mother. The Jean Piaget and Lev Vygotsky would explain this as an egocentric nature of child's thought. तो पिला माने देखरे ए जे छुआटा निज संगे कथा होय सेटा को हमर Vygotsky कोन कोनरे से कोनति कि प्राइवेट स्पीच जेटा दरकार छुआर कोन तार एक्शन को रेगुलेट करिया पे एटा दरकार किंतु हमर जीन पियाजेट थाटा कोन कहिथिले से कहले इगोसेंट्रिक स्पीच बोली कहिथिले आंसर कोन ऑप्शन नंबर ए पिला माने करेक्ट आंसर बुझियला 37 नंबर क्वेश्चन दिबा 37 नंबर क्वेश्चन देछि कोन को देछि करे असेसमेंट इज पर्पसफुल इफ डैश प्लान असेसमेंट केते बेले पर्पसफुल होई परिबो इफ इट serves as a feedback for the student as well as for the teacher. It is done once at the end of the year. The comparative evaluation are made to differentiate between the student achievement that induces the fear and stress among the student. तो पिला माने असेसमेंट केते बेले पर्पसफुल हे करियो जते बेले सी हमर टीचर एंड स्टूडेंट बोथ को पिला ने कोन करे फीडबैक भले काम करू तो असेसमेंट जानिथिले असेसमेंट इज फीडबैक ओरिएंटेड असेसमेंट है फीडबैक ओरिएंटेड पिला माने किंतु हमर इवैल्यूएशन कोन जजमेंट बुझिला तो ऑप्शन नंबर ए हे करेक्ट आंसर एप्टीट्यूड को दिबा पहिला पिला माने according to NCF 2005 the role of the teacher has to be dash चमत्कार क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन एटा पिला माने एग्जाम रे एमिति क्वेश्चन आसीबो बोले NCF 2005 अनुसार टीचर का रोल केमिति हो दरकार पिक्टोरियल फैसिलिटेटिव परमिसिव ना अथॉरिटेटिव तो पिला माने हमर कोन कहछि NCF 2005 कहा को बेस करी खैछि कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी बा कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच आ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच अनुसार टीचर केमिति हो दरकार टीचर एक्ट एज फैसिलिटेटर ओडी आंसर अछि ऑप्शन नंबर बी रे अछि मारी दि ऑप्शन नंबर बी आ किछि देखि बारे नाही हमर बुझला जिबा 39 बहुत लंबा क्लास है 39 देखो बोले चाइल्ड विथ हियरिंग इंपेयरमेंट तो जहां पिला ने सुनिबार असुविधा अछि ला विल नॉट बेनिफिट फ्रॉम द एकेडमिक एजुकेशन ओनली एंड शुड बी गिवन वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टेड कैन डू वेरी वेल इन द रेगुलर स्कूल इफ ए सुइटेबल फैसिलिटेशन रिसोर्सेस आर प्रोवाइडेड will never able to perform on par of the classmate in the regular school that should be sent only to the school for hearing impairment not to the regular school गोटे छुआ रे हियरिंग इंपेयरमेंट अछि ताले में कोन करिवा बोला सी ता फर्स्ट ऑप्शन क देला कोन रे सी एकेडमिक एजुकेशन ले भलो करि परिबोनी बा ता बेनिफिशियल हबोनी ताको हमें वोकेशनल एजुकेशन दबा इनक्लूसिव एजुकेशन काटी दोछ ऑप्शन बी कोन देला रे सी रेगुलर स्कूल ले बहुत भलो करि परिबो जदिटा कोन सुइटेबल फैसिलिटी आउ कोन रे पिला माने रिसोर्स अवेलेबल रहला पूरा ठीक अछि ऑप्शन नंबर बी तो ऑप्शन नंबर बी वाला आंसर पाई गले तथापि आउ दिटा ऑप्शन पढि दबारे तो नेवर बी एबल टू परफॉर्म ऑन पार विथ द क्लासमेट जेमिति करूछनी से करि परिबनी काई करि परिबनी पूरा भूल क्लास शुड बी सेंट टू द स्कूल ओनली फॉर द हियरिंग इंपेयरमेंट काई हमर स्पेशल एजुकेशन दबा ना कोन सेटा तो हम विरोध करू छी इनक्लूसिव एजुकेशन एटाई भूल तो आंसर कोन रे ऑप्शन नंबर चलो 37 कोन देला according to Right to Education Act 2009 children with the special need should study as पहिला RT 2009 बार Right to Education Act 2009 न जो जाई तो जो मानकर स्पेशल नीड रहिला जो छुआ मानकर स्पेशल नीड रहिला से माने केमिति पढिबे इन ए स्पेशल स्कूल क्रिएटेड बाय एक्सक्लूसिवली फॉर देम पूरा भूल एट होम विथ देयर पेरेंट्स घरे का रखेटा भूल इन एन इंक्लूसिव एजुकेशन सेटअप व्हिच प्रोविजन आसियो तो RT कोन बुझ रे
समस्त पिला माने गोटे स्कूल रे पढे इंक्लूसिव एजुकेशन से खासे कहूचे से सेग्रीगेशन को विरोध करू से ऑप्शन नंबर सी पिला माने करेक्ट आंसर 41 नंबर जीवा 41 नंबर बढ़िया क्वेश्चन पुनी दैट टीचर कैन एड्रेस द डाइवर्सिटी इन हर क्लास पिला माने बोधे हबो एएसएस ए जी क्लास बाय तो टीचर पिला माने ताकर क्लासरूम रे डाइवर्सिटी को केमिति पिला माने से एड्रेस करि परिबे हला ऑप्शन चारटा पड़ो आंसर दियो पहिला रे केमिति करिवे फर्स्ट हला एक्सेप्टिंग एंड वैल्यूइंग डिफरेंस ना यूजिंग सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द चिल्ड्रन एज ए पेडागोजिक रिसोर्स ना accommodating different learning style ना giving standard instruction and getting uniform benchmark for the performance तो पिला ने डाइवर्सिटी हम क्लासरूम डाइवर्सिटी को हम केमिति गोटे टीचर क्लासरूम डाइवर्सिटी केमिति एड्रेस करि परिबो फाइनल एक्सेप्टिंग वैल्यूइंग डिफरेंस पूरा बढ़िया ऑप्शन यूजिंग सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द चिल्ड्रन एज ए पेडागोजिक रिसोर्स एटा भी पिला माने बढ़िया accommodating different learning style एटा भी बढ़िया giving standardized instruction ना standardized instruction में दबानी में इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन दबा स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रक्शन माने समस्त भाई गोटे प्रकार इंस्ट्रक्शन हला यदि समस्त भाई गोटे भाई इंस्ट्रक्शन दबा सेटे पिलानी किछ हमर स्लो लर्नर अछन किछ हमर कोन अछन रे माने फिजिकल हैंडिकैप अछन तो समस्त भाई गोटे प्रकार इंस्ट्रक्शन दबा सेटा पिला माने भलो नुहे तो आंसर कोन हो रे ऑप्शन नंबर ए भी ठीक बी भी ठीक सी भी ठीक कोड अछि ए बी सी कोड अछि देखो ऑप्शन नंबर डी रे अछि ए बी सी हेगला ऑप्शन नंबर डी हेगला पिलाने करेक्ट आंसर बुझला तापर चला 42 नंबर को जिबा 14 नंबर कोन कहला रे according to national curriculum framework 2005 learning is dash and its character is dash plan दीटा क्वेश्चन पहला नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 अनुसार लर्निंग ता कोन और तार कैरेक्टर ता कोन लर्निंग इज पैसिव कैरेक्टर इज सिंपल द लर्निंग इज एक्टिव कैरेक्टर इज सोशल द लर्निंग इज पैसिव कैरेक्टर इज सोशल द लर्निंग इज एक्टिव एंड कैरेक्टर इज सिंपल लानी यतर कोटा आंसर अब कोडा हबरे तो पिला माने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 कहूचे लर्निंग ता केमिति हबरे लर्निंग शुड बी एक्टिव हला तनो एक्टिव कोड अछि रे ऑप्शन नंबर बी रे एक्टिव अछि ऑप्शन नंबर डी रे एक्टिव अछि आ कैरेक्टर केमिति हो दरकार कैरेक्टर सिंपल एटा मन रखियो पिला ने पढिबार चांसेस बहुत अछि हला तनो ऑप्शन नंबर कोडी पिला ने एक्टिव सिंपल अछि ऑप्शन नंबर डी रे अछि ऑप्शन नंबर डी हे गला करेक्ट आंसर हला चलो 43 नंबर जी 43 नंबर कोन देख देखो to enable the student to think independently and become effective learner it is important for the teacher to test तो पिला माने छुआ माने को कोन इंडिपेंडेंटली थिंकिंग करिया बे हमें ताको मोटिवेट करिया बा ताको हमें माने कोन सक्षम बनैबा आ से माने इफेक्टिव लर्नर बनैया पई सक्षम करिया पई टीचर एठी कोन करिवे टीच द स्टूडेंट हाउ टू मॉनिटर देयर ओन लर्निंग द ऑफर रिवार्ड गोटे मिनिट पिला माने 4 सरी जीव बोधे to enable the student to think independently and become effective learner it is important for the teacher to teach the student how to monitor their own learning the offer reward for each success achieved by the student give information in small unit or chunk perfect information in an organized manner to make it easier to recall तो पिला माने तो माने को इंडिपेंडेंट लर्नर बनेगा इफेक्टिव लर्नर बनेगा तापे कोन करिया छने इंडिपेंडेंटली थिंक करिवे इफेक्टिव लर्नर बनिवे ता पई हमें कोन पिला माने करिवा हैला कोन करिवा से देइछ रे कोन करिवा इफेक्टिव लर्नर छ माने बनिवे इंडिपेंडेंट लर्नर बनिवे पहिला टीच द स्टूडेंट हाउ टू मॉनिटर देयर ओन लर्निंग ऑप्शन ता ठीक अछि इंडिपेंडेंट ओन लर्निंग को से जदि पिला माने निजे मॉनिटर करले तानि जे इंडिपेंडेंटली थिंक करि पारे इफेक्टिव लर्नर बनिवे ऑफर रिवार्ड ना रिवार्ड दबडा पूरा भूल give information in small unit information dale ठीक अछि कि not appropriate the present information in organized manner to make easier for recall पिला माने खराब ऑप्शन यदि घुसी देबे से इंडिपेंडेंट लर्नर केमि देबे से पिला ने केमि निजे थिंक करिबारे जदि घुसीले कोन ऑप्शन नंबर ए हबो बुझियला तब घुसीबा कहबेनी से निजे पिला माने नॉलेज को कंस्ट्रक्शन करि तापर देखा क्वेश्चन नंबर 44 if a student want a student to acquire the problem solving skill the student should be engaged in activity that involves test तो कोन कहला रे तो पिला माने गोटे टीचर कोन चाहौ जे तार स्टूडेंट कोन करियो पिला ने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को अचीव करियो हला ता हेले
सी हमर टीचर कोन करिवो एटी छुआ मानु को सी एक्टिविटी रे एंगेज करिया पे कोन करिवो पला रिकॉल मेमोराइजेशन कॉम्प्रिहेंशन पिला ने रिकॉल टा भी खराब वर्ड मेमोराइजेशन खराब वर्ड काटी दियो स्ट्रक्चर्ड वर्कशीट कंटेनिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रीड एंड प्रैक्टिस एटा भी खराब वर्ड इंक्वायरी रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग यस पिला देखरे जे प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी टा को कोन तार गुरुत्व दउछि छुआ माने प्रॉब्लम सॉल्विंग करिवे हला प्रॉब्लम सॉल्विंग करिया माने से पिला ने निजे इंक्वायरी करिवे ना रीजनिंग डेवलप और डिसीजन मेकिंग करिवे तो आंसर कोन ऑप्शन बुझिला एठी कोन देइसे को स्ट्रक्चर्ड वर्कशीट कंटेनिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यदि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे दवा तो केमिति प्रॉब्लम सॉल्व करे सेटा ढाबा मारे की मार दबो 10 पाटा खंडे तो पिला ने सेटा दे देले भी हम पई इफेक्टिव हबनी रे हला सेटा में जदि दबा सेटा हम पई पिला माने इफेक्टिव हबो नाही तो आंसर कोन है ऑप्शन नंबर डी इंक्वायरिंग रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग 45 नंबर जिबा कोन दला देखरे हला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट लर्निंग या भीतर को फैक्टर पिला ने लर्निंग को अफेक्ट करू छे मोटिवेशन ऑफ लर्नर मैच्योरेशन ऑफ लर्नर या टीचिंग स्ट्रेटजी फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ द लर्नर देखो रे तो पिला ने लर्निंग को की अफेक्ट पकेबो मोटिवेशन ऑफ लर्नर यस एटा पिला माने अफेक्ट पकाए मैच्योरेशन ऑफ लर्नर अफेक्ट पकाए टीचिंग स्ट्रेटजी एटा भी अफेक्ट पकाए फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ लर्नर एटा भी अफेक्ट पकाए ये सब गुडा जदी पकोचे कोड अछि पिला ने देखो ए बी सी डी चारटांग करेक्ट बुझला चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिबा क्वेश्चन नंबर 46 क्वेश्चन 46 कोन कहला रे मीनिंगफुल लर्निंग इज बेस्ट पिला ने मीनिंगफुल लर्निंग हम काहा को कहबा द इमिटेशन ऑफ एडल्ट and more able peer the pairing and association between the stimulus and response the passive reasoning of the given information the active creation of knowledge structure from the personal experience the meaningful learning माने कोन रे तो पिला ने छोटा निज नॉलेज कंस्ट्रक्शन करिवो बुझियला तार प्रीवियस नॉलेज की यूज करके से पढिबो हमें कोन करे टीचर कोन करे फैसिलिटेटर हबे गुडा को पिला माने हला फास्ट दला इमिटेशन ऑफ एडल्ट इमिटेट करिवो पिला माने मीनिंगफुल केमे हला तो इमिटेट कला पेयरिंग एंड एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलेट एंड रेस्पॉन्स तो पिला ने पूरा बिहेवियरिज्म को फॉलो करिछि कि मीनिंगफुल लर्निंग एटा काहा को फॉलो करे रे कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच तो ऑप्शन नंबर बी कटि गला पैसिव रीजनिंग पिला ने पैसिव हला माने पूरा भूल काहे करे हमर स्टूडेंट शुड बी एक्टिव स्टूडेंट पिला ने पाठ पढा एक्टिव हबो टीचर पिला माने कोन करे दागर फैसिलिटेटर करिवो फैसिलिटेट करिवो तण पिला तीनटे जदी भूलला कोन हमर ऑप्शन नंबर डी एक्टिव क्रिएशन ऑफ नॉलेज स्ट्रक्चर फ्रॉम द पर्सनल एक्सपीरियंस हला ऑप्शन नंबर डी हला करेक्ट चलो 47 नंबर जीवा 47 नंबर कौन दला रे तो द कांसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन आज प्रपोज्ड बाय जीन पियाजेट मींस दैट डेस तो पिला मन जो कंजर्वेशन में पढिथिले कोडा सरे जे हमर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज रे जो कंजर्वेशन पिला ने एक्टिव आसी जाए तो सही कंजर्वेशन माने कोन हला एटा पचरे छी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन पहला सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज रिमेन सेम इवन व्हेन द आउटवर्ड अपीयरेंस चेंजेस like it is important to protect the wildlife and forest the one can achieve at the correct conclusion by systematically testing the hypothesis now talking the perspective of other into the consideration is an important cognitive ability तो या भीतर कंजर्वेशन माने कोन पिला माने एयार कंजर्वेशन माने मन कर एटा गोटे विकटे एटा टिके छोटिया विकटे एठी मु समान अमाउंट रो पानी रखिली एठी भी सेति के पानी रखिछि रे छोटो छुआ के देखैबी छोटो छोटा कोन कहबे एठी बेसी पानी अछि एठी कम पानी अछि बुझियला किंतु जला कंक्रीट ऑपरेशनल से पहुंची जीवा ताकू जरी पचारिबी या भीतर कोठी बेसी पानी अछि से को दीडा रे समान अछि बुझियला एटा को कहै कंजर्वेशन तो कंजर्वेशन माने कोन रे ऑप्शन नंबर ए सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टी रिमेन द सेम इवन व्हेन द आउटवर्ड अपीयरेंस चेंजेस ऑप्शन नंबर ए पिला मानला करेक्ट बुझियला तापर जीवा पिला ने क्वेश्चन नंबर 48 को लास्ट क्वेश्चन आजिरो अकॉर्डिंग टू लेफ हाइगोट्स्की तो लेफ हाइगोट्स्की को अनुसार या भीतर कोटा ठीक language and development changes the nature of human thought the interaction with the adult and the peer does not influence the language development the culture play very small role in the language development the children learn language through the language acquisition device the Vygotsky को अनुसार कोटा सदा कोटा पलाने ठीक पला language development changes the nature of human thought ना interaction with the adult and peer does not influence the influence पर एटा भूल कल्चर प्ले वेरी स्मॉल रोल प्ले करने पिला माने बहुत बड़ा रोल करे तो एटा भी भूल चिल्ड्रन लर्न द लैंग्वेज थ्रू द लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस एटा पिला लाड रो कांसेप्ट पिला ने Vygotsky देइ नथिले के देइथिले चॉम्स्की देइथिले एटा भूल तो ऑप्शन नंबर पिला माने बी भूले गेला सी भूले गेला डी भी भूले गेला तो हमें का संग जिबा ऑप्शन नंबर ए संग जिबा बुझियला तो हमें ऑप्शन नंबर ए संग रे जिबा तो पिला माने आज रो क्लास रे 48 टा क्वेश्चन थिला
हला पुणे में नेक्स्ट क्लास रे पिला माने 50+ क्वेश्चन लेके आसीबा आज जदि क्लास भल लागला पिला निहाते सांग मानक संग शेयर करबा लाइक करबा आउ पिला माने सब्सक्राइब करबा पुणे हम पढिबा नेक्स्ट क्लास रे आउ तमर पुणे पिला ने फिजिक्स रो प्रैक्टिस आसी जिवो तो सेटा भी तमे कवर करो आ टीचिंग एप्टीट्यूड रे पुणे हम नेक्स्ट क्लास रे पुणे पढिबा समस्त भल रे था जय जगन्नाथ।